built in Selenium. So in this video I will cover all these methods you can see on the screen, and it is seen that most of the web page interactions needed can be performed with WebDriver element commands like clicking on a button using click method and entering text in text box using send keys, etc. In fact, even form can be submitted using the submit method. Means form is submitted using the submit command, and also to perform interactions with drop down list. WebDriver provides select class, which has that's like select by value and deselect all and get options, etc. You can see my previous video how to select class. In short, almost all interactions with the web page elements can be performed. That one must be wondering, why do we need one more separate class like actions class? Well, it's true that WebDriver command provide a fairly sufficient set of commands to perform basic interaction, but in many cases, these basic interactions are not enough. Automation script needs to perform more complicated interactions than these. So guys, let's consider a case where a user needs to perform a double click on the element, or maybe drag and drop the element, or even emulate user action of entering uppercase letters in the text box using shift plus letters. So these are the cases where some advanced API methods are required, which can handle complex interactions like mouse event and keyboard events, and that is the whole process of having actions class in place. So in this video, I'm going to cover one of the important class in advanced user interaction API of WebDriver, that is actions class in Selenium. So let's come to the points. It's I will cover these methods. You can see key down and the send key up its keyboard operations. Then we'll move to mouse events like click, double click, context click, click and hold, drag and drop, and drag and drop by offset, x and y offsets, and move by offsets, move to elements, and release. We will see in this video. So let's start. Okay. So first, we will see key down. Okay. So perform a key down means in this method, need we will if we press the key in the keyboard, so this method will happen the same. मीन्स अगर कीबोर्ड से जो भी प्रेस अपन अगर शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे तो ये मेथड सेम काम करेगा. मीन्स इट विल वर्क सेम. ओके. सो लेट्स सी key down. So first create the main method. Okay, and create the WebDriver driver equal to new Chrome driver. So to execute Chrome driver, we need to set the properties. So system.set properties, and is WebDriver dot Chrome dot driver. Need to pass the value. You just need to pass the Chrome driver which is installed in, which should be installed in your computer or laptop. So my driver is installed in downloads folder. Yeah, this one. Okay, so just copy the path, Chrome driver, and paste it here. Okay, so let's see driver now. Driver dot get to open that website, which is let's practice with IRCTC.
Just press this website. Now just want to enter the text in the from text box in capital letter. Okay, so first need to find the web element. Using xpath we can find. Okay, yep, placeholder. That seems uniquely. Okay, so it was input placeholder from. Okay, we have found one unique web element. So just create an object of web element and variable web element equal to driver dot find element by dot we have created xpath, so it will return an web element. Okay, then create the object of actions class. Okay guys, it's actions class equal to new actions. Okay, so here need to pass the WebDriver object, so driver. Okay, done. So in this, let's see the key down. Okay, so key down क्या करेगा, की को प्रेस करके रखेगा. Okay, so action dot key down, you can see web element and target and key. So target should be web element is element, and key sequence. So what should be done? I should press shift button. So keys. Okay, dot shift. ओके, डॉट शिफ्ट क्या सेंड करना है, टेक्स्ट सेंड करना है. सेंड कीज में मैं फ्रॉम अहमदाबाद. ओके, डॉट. अब मैंने सेंड कर दिया, की प्रेस है. अब मुझे की को रिलीज भी करना है, तो की अप. ठीक है, की अप. कौन सी की रिलीज करनी है? कीज डॉट शिफ्ट. नाउ डॉट परफॉर्म. ये हमेशा याद रखना दोस्तों कि परफॉर्म जो है, इट विल एग्जीक्यूट दीज एक्शंस. So without perform we cannot execute these operations. Okay, so अगर आप perform नहीं लगाएंगे तो कोई भी operation perform नहीं होगा. So perform must be there. Okay, let's see. So first मैंने क्या, एक्शन क्लास जो अपने ऑब्जेक्ट बनाया था. ठीक है, ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में पास किया एक्शन डॉट की डाउन. मतलब मुझे की को डाउन करके रखना है. कौन सी कीज को, कहाँ पे, उस एलिमेंट पे. ये ऑप्शन ओवरलोडेड मेथड है यहाँ पे. अगर ये एलिमेंट नहीं दूंगा तो वो दूसरा ओवरलोडेड मेथड यहाँ पे कॉल होगा. तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट दे दिया, स्पेशली उसी टेक्स्ट बॉक्स पे पहुंचने पे की को डाउन करेगा. कौन सी की, शिफ्ट की. ठीक है, डॉट सेंड कीज मतलब मुझे वहाँ पे क्या सेंड करना है, ये टेक्स्ट स्ट्रिंग सेंड करनी है जो कि अहमदाबाद है. डॉट की अप, अब मुझे रिलीज कर देनी है की. कौन सी की, शिफ्ट की. ठीक है, डॉट परफॉर्म टू एग्जीक्यूट दिस एक्शन. ओके, लेट्स सी it will execute or not. If it is execute, then Ahmedabad should be written in capital letter.
Ahmedabad is written in capital letter. Okay, guys. So I guess key down and keep is covered. Okay, let's add one line. Execution is done. Let's come to the another topic. Send keys. Send keys is also covered. Okay, send keys is a string we can send. Okay, let's come to the mouse events. Mouse events means if we can click left click, right click, double click, context click, it means right click. Okay, and click and hold and drag and drop. So let's come to the first topic, which is click. Just need to click, then just like if I want to click first element. Okay, so we found a typical xpath. um, okay, this one, this li. Okay, so let's find this web element lim class. Okay, it's li class attribute equal to single quotes. Okay, two elements we found. Let's first element done. Okay, so I just need to click on that. Okay, so action dot click. Where should we click? That web element we have found. So driver dot find element by dot, we have found xpath dot perform. Okay, let's see. It should be what? Okay, error is something happening, means unable to locate element. Okay guys, so element is not located. So हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ हमें वेट लगाना होगा. तो वेट के लिए मैंने आप बनाया है वीडियो, वो आप देखना कि कौन कौन से वेट होते हैं और क्या अपन यूज में लेते हैं. अभी मैं सिंपल सब आपको एक्शन क्लास पे कंसंट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे स्टैटिक वेट में ले लेता हूँ 2 सेकंड का. ठीक है, ये थ्रो करने के लिए बोलेगा तो एक्सेप्टेशन होगा. लेट्स एग्जीक्यूट अगेन. It is loading. That is little bit slow today.
Okay, guys, let's see what will happen. Should be clicked on and the junction. It's not clicked. Throwing in no such element. Let's see. This is X. It's not finding. Okay. So there's something wrong in XPath. Let's find again. Let's try this XPath. Let's create a variable element and option. Okay, so here just need to pass option. Let's try. Okay, done. So it's working now, and the junction is selected, and our execution is done. So we have covered click. Now come to the second one, which is double click. Just like double click on mouse to select like this. Here, just like if we want to double click in book, then it should be selected. Okay, it should be highlighted. So just find this web element using xpath, heading first, Control F, this class. There are two class. Label equal to class. Okay, xpath we have found, and it's uniquely identifier. Okay, so clicking is performed. Now perform double click. So just action dot double click. Have you seen?
You can see double click, need to perform web element driver dot find element I dot xpath expression dot perform. Always remember this perform. Let's see. Okay, browser is launching. It is navigating. It should be double click on book. Okay, have you seen? It is highlighted. So if you want to highlight the text and if you need to double click, you can use actions class dot double click and just need to pass the web element. Okay, now it's context click. So context click is a right click. Whenever you perform the right click or you want to get the options and need to click right, you can use context click. Okay, let's see. If I want right click on this book, just need to copy this one, paste, डबल क्लिक कीजिएगा, क्या करना है अपन को, text click and web element. Okay, context click. Let's see. Context click means right click. See, right is clicked, double click on right click, so these options are displayed. Okay, so we have learned right click. Now come to the next point. Next point is click and hold. Clicks without releasing in the middle of the given element. Okay, so ये क्लिक करेगा और रिलीज नहीं करेगा, मतलब माउस को क्लिक करके होल्ड करके रखेगा. ओके, होल्ड क्या करेगा यहाँ पे, बस उसको क्लिक करके और होल्ड करके रखेगा. तो जैसे कि अपन यहाँ पे करके देखते हैं, एक्शंस डॉट क्लिक एंड होल्ड. ठीक है, एलिमेंट डॉट परफॉर्म. अब यहाँ पे इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लिक एंड होल्ड करेंगे उससे कोई कुछ तो परफॉर्म होगा नहीं, बस करके होल्ड करके रखेगा. तो ये अपने काम आता था, क्लिक एंड होल्ड करे, फिर उसके बाद मूव करे तो मूव टू एलिमेंट यहाँ पे अपन कर सकते हैं. ठीक है, तो एलिमेंट यहाँ पे मैं पास कर दूंगा कोई सा भी डॉट, फिर वहाँ पे अपन को रिलीज करना होता है तो रिलीज कर देंगे. ओके, रिलीज डॉट परफॉर्म. तो ये इतनी बड़ी अपन को लिखनी होती थी जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे. देखो ये ड्रैग एंड ड्रॉप ही हो रहा है बिल्कुल. क्लिक एंड होल्ड किया किसी एलिमेंट को, फिर मूव किया किसी दूसरे एलिमेंट पे, फिर रिलीज कर दिया. ठीक है, तो डायरेक्ट अपने पास क्या मेथड है, नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप. सो इसकी जगह अपन क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप को प्रेफर करेंगे. तो देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप को कैसे अपन यूज में लेते हैं. सो गाइस हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप. जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मुझे एक वेबसाइट मिली. तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ड्रैग एंड ड्रैग एंड ड्रॉप को कैसे यूज में लेंगे अपन. And if you like this video, then please like it and subscribe this channel. Okay, so thanks for watching.